Assalamu Alaikum, welcome to Shaffy'svlog. कैसे हैं आप सब? I hope that everyone is safe and good. Well, today I'm back with a new review. और आज मैं review करने वाला हूँ. Today I'm going to review a book. Well, this book is like I can bet you and I can assure you that अगर आप एक बार ये किताब पढ़ते हैं उसके बाद आपकी like the very next second the way of your thinking will change, your life will change for sure. So मैं like जो भी चीज़ which I come across, I love that. I would love to share it with everyone. Okay, so today I'm gonna review this is the 7 Spiritual Law of Success. Yes, by Deepak Chopra. Now this book एक छोटा सा book है. This is a very small book. Okay, very easy to carry and yes, इसमें जो है 7 spiritual laws है. अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं वेल दिस बुक विल टेक हार्डली लाइक आई वुड से लाइक हार्डली 45 मिनट्स 45 मिनट्स में आप ये बुक को पूरा पढ़ सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर रीडर लाइक मी, इफ आई एम लाइक अ स्पीड रीडर, सो लाइक मेरे लिए तो आधा घंटा इज इनफ. आई कैन रीड दिस. ओके, सो इट्स वेरी स्मॉल एंड इट्स लाइक लाइफ ऑल्टरिंग. लाइक अगर आप पढ़ लो एक बार आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. द वे ऑफ थिंकिंग विल चेंज. एंड इसमें क्या है इस बुक के बारे में, बेसिकली इसमें 7 स्पिरिचुअल लॉज हैं. Okay, and what are those 7 laws? I'll let you know. Okay, the very first law is the law of pure potentiality, law of giving and receiving, the law of karma, cause and effect, the law of least effort, the law of intention and desire, of detachment, and the last is The Law of Dharma or Purpose of Life. इस बुक को मैं सब चीज़ बताने वाला तो हूँ नहीं आपको. And once you read it, automatically you will find a difference in your life, like difference the way you think. And कुछ चीज़ें हैं इस बुक में जो मुझे बहुत like I'll quote 2 things. Well, the first thing is the flow of money. पैसा की flow कैसे होनी चाहिए, ये चीज़ आप इस बुक में सीख सकते हैं. It says the more you spend, the more you get. It was like this. So कभी पैसे के फ्लो को कभी रोकना मत. And I really like this concept. And जो सेकेंड चीज़ जो दीपक चोपड़ा ने जो इस बुक पे लिखा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, that was कभी आप किसी से मिलते हो, anyone that you encounter in your life, okay, कभी उससे खाली हाथ मत मिलना. आप किसी इंसान को कुछ दो. लाइक गिव एंड टेक का ज़माना है ये, फॉर श्योर. नाउ गिव, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन गिव. द वेरी फर्स्ट थिंग, मटेरियल गिफ्ट. अगर मटेरियल गिफ्ट आप नहीं दे सकते हो तो फ्लावर विद एन अप्रिशिएशन नोट. लाइक किसी से आप मिलते हो उसे फ्लावर दो या फिर एक अप्रिशिएशन नोट, उस इंसान को अप्रिशिएट करो. एंड द थर्ड बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड इज, आप उसके लिए दुआ कर सकते हो. यू कैन प्रे फॉर दैट पर्सन. सो imagine अगर आप ये चीज़ करते हो, then automatically it will come back to you. So that's how the flow of energy follows. Got it? So ये चीज़, ये I'm telling you like this, there are many points in this book which you will love it. I personally तो मैं आपको 100% recommend करूँगा. This is just for 170 rupees. This time मैं इस book का link अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो दैट इफ़ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, इट विल टेक यू टू अमेजॉन वेबसाइट. वहाँ से आप ये परचेस कर सकते हैं. एंड आई विल ट्राई इफ आई कैन गेट द PDF फोल्डर एज वेल, राइट. एंड या सो रीड दिस बुक. ये बुक पढ़ने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरी वे ऑफ थिंकिंग. एंड नाउ आई फील दैट येस आई कैन अकम्प्लिश any of my goals जो मेरे लिए सिर्फ एक सपना था पर वो अब सपना नहीं रह सकता. Now I can simply achieve my goals and yes, it's possible. For sure it's possible. Okay, so yes, any feedback and suggestions do let me know. And I would like to say like thank you so much Deepak Chopra for this book. And yes, ऐसी book लिखते रहिए आप हमारे लिए. And before I leave, please guys do subscribe, like and share as much as you can. Thank you.